Our journey started with this song of KK Pal. That means only our memories will remain. जुहू बीच में पहुंच के हम लोग को ये सीन देखने को मिला. Just look at the crowd and that on a Sunday evening. हम लोग 1.5 hours का ट्रैफिक में फंसे थे from Chembur to Juhu and कोई भी पार्किंग स्पेस खाली नहीं था. We had to park our car somewhere very far off. Still, we all are posing and smiling in front of the camera. बहुत दूर से समंदर का दर्शन मिला हम लोगों को. और ये भाई साहब तो देख रहे थे हम लोग क्या वीडियो ले जा रहे हैं भाई. आहा, थोड़ा ठंडक मिला. ये है कुल्फ़ी फालूदा, वन ऑफ द स्पेशलिटीज़ ऑफ जुहू बीच. ये ज़रूर ट्राई कीजिए वहाँ जब जाएंगे. बहुत टेस्टी था. हमारे बच्चे और उसके मम्मियाँ इसको बहुत एंजॉय किया. मेरे भाई के बेटी एक फ्रिस्बी लेके आई थी. वो सोची थी यहाँ आके अपनी दीदी के साथ खेलेगी, पर ये पूरा डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि यहाँ पे एकदम ही जगह नहीं था कुछ खेलने के लिए. When all the arguments were going on, I kept on shooting and pose in front of the camera. मेरी भाभी was thoroughly surprised to know that the video mode was on and I was capturing them. In the meantime, the frisbee was coming out and going inside the bag. She was so disappointed. Poor fellow. High tide के वजह से the water was slowly coming nearby, so हम लोग उतना देर तक वहाँ पे रह नहीं पाए. So we thought why should not we try some good food, street foods out there. The golgappa or pani puri, you should try over there as they were very tasty. 40 रुपीज़ के प्लेट में 6 मिल जाते हैं और वो काफ़ी है एक जन के लिए. After a thorough research in the Google, we finally arrived at the Guru Sagar food stall to have our pav bhaji. And it was needless to mention that the pav bhaji was very tasty and delicious. पर आप लोग दूसरे स्टॉल्स में भी पाव भाजी ट्राई कर सकते हैं. देखिए, एक ही दिन में तो बहुत सारे स्टॉल्स में हम लोग एक ही फूड ट्राई कर नहीं सकते. सो योर रिव्यूज़ आर ऑल्सो काउंटेबल एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट है. We finally returned home with less traffic and you can hear me singing at the backdrop. Thank you so much for watching my vlog till the end and do subscribe my channel for more such activities, cooking and music. Bye bye.